Well, South Africa still fighting their way in this really riveting contest between both these sides. At the end of the day, South Africa were 51 for 2, where they need 226 runs to win. We're back on pitch side, and day 4 is going to be an interesting one because South Africa is looking for those 226 runs, whereas Pakistan needs 8 wickets to win. So plenty to look forward to, and to talk about all the action today, I've got with me Waqar Younis and Sean Pollock. Waqar, Pakistan still perhaps ahead in terms of the fact that, you know, South Africa has to negate that spin challenge from their end. But they did show moments of brilliance. I'm talking about South Africa because we saw that after tea, there was a flurry of wickets. So overall, an interesting day's play of Test cricket. Yeah, absorbing day because, you know, Pakistan were in control of the game and then suddenly lost so many wickets in cluster and then allowed or gave chance to South Africa to come back in the game and then, of course, picking up 2 wickets, again pushing back. So that's the beauty of Test match cricket. So 226 tomorrow, it's definitely gettable, but they need a big partnership. These two at the crease are very, very important. If they tomorrow, and they have to bat for at least one session to just give some stability for the rest of the batters to come and sort of try to get that total. Well, at one point, Polly, it seemed like Pakistan would get a bigger lead, but it all happened after tea. We discussed that yesterday as well. Lots happened after tea yesterday. And today we saw Muthusamy once again just absolutely brilliant with the ball. He was. I mean, he did his job. He hit the right areas and managed to pick up wickets. For me, as a Mahmood's got to have a word with this Pakistan team. There's no ways in the situation that they are in, they should have lost 6 wickets for the addition of 17 runs. It might not affect the match, probably won't affect the match, probably end up with Pakistan winning. But as a team and standards that you said, that's not acceptable, particularly some of the way that the wickets fell, the shots that were played, the lack of application. You want to make sure that South Africa had no chance. They probably still, as I say, will lose, but Pakistan should have posted well over 300 and made sure that South Africa were completely out of it. And it's those periods where bad habits creep into teams' performances, where they allow that to be okay. If you don't discuss it in the team and say, guys, how did that happen? That's not acceptable. Then it can kind of lurk around and end up making the same mistake down the line. So they'll be disappointed about that. Going back to Muthusamy, he's got to be really excited. He talked about he's got the momentum of the 6-wicket ball. Now he's got another 5 wickets, so he's got another ball to put up and a 10-for. So he's definitely going to get those cased. And he just did what he's very good at doing, hitting that area consistently, asking the right questions. And South Africa will be really chuffed with what he did. Yeah, and it was almost like after tea, there was a bit of recklessness from the Pakistan batters, which we got to witness. Waqar, I mean, what would you attribute that down to, just in terms of what we saw? It seemed like they were in a bit of a hurry. I think they got comfortable. You know, they thought that they got enough runs with the 2 spinners have done for them in the last couple of series, and you get complacent at times, and then you start playing, you know, those big shots, and you keep losing wickets. Yes, if South Africa wouldn't have lost any wicket this evening right now while we're sitting, then they would be worried. Because they've lost 2 wickets, they'll still be, you know, very comfortable. But I agree with Sean that you know, you got to really, you know, address these things, because it's not happened for the first time. It happened just recently in the Asia Cup also, where we lost, I think, 9 wickets in for 30 odd runs and end up on a losing side. So these things need to be addressed. Overall, comfortable, happy with the situation right now. Yeah, they would want it to be perhaps more than comfortable in this situation. But speaking of South Africa's batting that we've seen so far, Rickleton still very much there. Just in terms of what happened earlier on after tea, Pakistan were bowled out for 167, with Babar and Abdullah were the top scorers of this particular innings. 42 in 72 balls is what Babar Azam made. When the South African bowlers, the spinners in particular, were spot on. Muthusamy once again amongst the wickets, and Simon Harmer as well doing a great job, and really bowling them out for 167 was a great effort in these conditions.
Well, we're just talking about what happened after tea and how Pakistan sort of lost their way through as well. You've got to give credit to the bowlers where they deserve. Of course, they bowled really well, but just in terms of the choice of shots, Waqar. Yeah, I think it also all started from South Shakil's shot. That I thought was not unnecessary just before tea. And on that same score, 167, Pakistan lost 3 wickets, and it happened in the first inning also. At 199, they lost 3, and then they lost 5 wickets in cluster. So this has been a problem, but I'm not taking anything away from the bowlers. I thought they bowled beautifully. They didn't give anything away. The captaincy was good. They set the field quite nicely. They had the idea. They knew what Pakistani batters are thinking, and full marks to Muthusamy the way he actually bowled. He was wonderful. And the batters out there right now, they are the 2 batters that did well in that first innings, Ryan Rickleton, and we've seen that what kind of innings that he produced. And then you've got Tony DeZorzi. He was also in great nick. So they seem to be defiant out there. Yeah, they were, and I think it's all about working out a game plan on these kind of pitches, because it's unusual. It's not an easy batting surface. So when you spend some time at the crease in the first innings, you've worked out what's the right shot. Should I play this shot? Should I look to get outside the line, get my pads outside the line, reverse sweep or no orthodox sweep? By being at the crease for that period, they've worked it out now. So they are key for South Africa in this run chase. They now know what they want to do. They're comfortable. They've got runs under the belt. If South Africa are to get close to knocking this off, one of those guys would probably have to get a 3-figure score himself again, much like DeZorzi did in the first innings. So they will be paramount to the run chase. I mean, as a South African team, you're going to sit there and you're going to say, okay, we need to get 220-odd runs. What does that mean? It means 2 batters probably have to get another 40. So if these 2 got 40 each, and then there were contributions of 20s and 30s from the other top order, and some 10s and 15s, all of a sudden you can get close. I mean, your maths is really good. Well, you got to give them this idea of what it's going to be. So it's 220, 9 batters are going to go to the crease, 25 each. If you each get 25, you win the game. Yeah. And that's the thinking it's got to be. I mean, it's unlikely because that surface is difficult and new batters coming to the crease have struggled, and some of the guys haven't been in the middle, like Stubbs and Brevis haven't spent any time there whatsoever. But these 2 have given them a chance. They're there tomorrow. And if they can play it a similar way to they did in the first innings, you never know for South Africa. Well, they can take inspiration from that World Test Championship final in your own words. So if you're a South African fan, there's every reason to be optimistic, judging by what we've seen in the last few months. Taking a short break, and we'll be back just in a bit. Well, back on pitch side, and we've been joined by a very, very special guest, someone who's literally put Pakistan in a winning position, and he's been doing that for the last few years on these turning tracks. So full credit to him. I've been joined by Noman Ali. Noman, thank you so much. अपना वक्त निकालने का, considering कि अभी मैच चल रहा है, इतनी ज़्यादा विकेटें आप ले लेते हैं और पाकिस्तान अवाम को खुश करते हैं. पहले तो बताएं, इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग, इतनी ज़्यादा विकेट्स इन दीज कंडीशंस, कैसी लगी कंडीशंस, क्या सोच के आए थे कि मेरी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए यहाँ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बस कोशिश यही होती है कि जब से देखें क्रिकेट स्टार्ट की थी कि और जब से लेके अभी तक एक ही कोशिश है, लेफ़्ट आर्म स्पिन के अंदर आपको पता है डिमांड होती है कि अपनी जगह पे बॉल करो और अपने एरियाज़ में बॉल करो. और खुशकिस्मती है कि पिछले कुछ टाइम से यहाँ ये कंडीशन स्पिन के लिए बहुत साजगार है और उसमें भी यही कोशिश करता हूँ सिंपल अपने एरिया में बॉल करूँ, अच्छी बॉलिंग करूँ और सक्सेस अल्लाह ताला खुद ही देते हैं. अच्छा, ये जो आपका कंट्रोल है, जिस तरह आपने कहा ना जगह पे बॉल करना, ये डेवलप डोमेस्टिक क्रिकेट से होता है वहाँ पे इतनी फर्स्ट क्लास खेलने के बाद, या किस चीज़ पे कहेंगे कि इसी तरह प्रैक्टिस करने से कौन सा वो ऐसा एस्पेक्ट है जिससे आपका ये कंट्रोल इतना डेवलप हुआ है? देखें, आप जितनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं और जो मैं काफ़ी टाइम से काफ़ी अरसे से डोमेस्टिक क्रिकेट खेला हूँ और मुख्तलिफ कंडीशन में खेला हूँ, ज़्यादा क्रिकेट में खेला हूँ, KRL में वहाँ पे खेला हूँ, तो वहाँ पे इतना स्पिन नहीं मिलता था और वहाँ पे आपकी कोशिश यही होती थी कि आप अपने एरिया में बॉल करें. वहाँ पे अगर अपने एरिया में बॉल करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी. और फर्स्ट क्लास और लंबी रेड बॉल की जितनी भी क्रिकेट है, आप जितने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेंगे, मैचेस खेलेंगे, लंबे लंबे स्पेल करेंगे, डिफरेंट कंडीशन में स्पेल करेंगे, आपको एक बार मुश्किल होगी लेकिन आप वहाँ से करके ही आसानी आएगी और आप मतलब सक्सेस आपको वहीं से मिलेगी और आपके एरिया भी पक्का होगा बॉलिंग का.
देखिए, मैं समझता हूँ कि ये एक प्राइम एग्जांपल है नोमान, मतलब फर्स्ट क्लास क्रिकेट इतना ज़रूरी है। अगर आपने ग्रेट प्लेयर बनना है, अगर टेस्ट मैच क्रिकेट, क्योंकि टेस्ट मैच क्रिकेट मानी जाती है कि जो टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म करता है वो ग्रेट्स में माना जाता है। तो आई थिंक जिस तरह की परफॉर्मेंस है, ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत कंडीशंस, थोड़ी बहुत नहीं वैसे काफ़ी सारी कंडीशंस आपको हेल्प मिल रही है, पर लेकिन उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि जब कंडीशन कंजूसिव हों स्पिन के लिए, फास्ट के लिए, तो मेरा ख्याल है बॉलर पे ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि आपको ये होता है कि मुझे ही परफॉर्म करना है, मेरे पर ही प्रेशर है। तो आई थिंक ओवर द इयर्स, ये पिछले साल 2 साल में आपने माशाल्लाह कमाल कर दिया। विकी भाई देखें, वही जो पहला सवाल था मैं उसी को कहना चाहूँगा कि अब आपका फोकस भी, जब आप टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं तो आपका फोकस भी आप टेस्ट क्रिकेट पे होता है, और जाकर आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं तो वो 4 डे क्रिकेट से आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। और पिछले 5-6 महीने से मैं यहाँ NCA में था, आकिब भाई NCA में और अब्दुलरहमान भाई माना भाई के साथ मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है पिछले 6 महीने। क्रिकेट के लिए आपको लंबी बॉलिंग करनी पड़ती है, उतना लोड आप जब अपनी प्रैक्टिस में और उसमें डालेंगे और अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में डालेंगे तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। आखिरी जो फर्स्ट क्लास का मैच था गालिबन फरवरी में खेला था ना, काफ़ी अरसे से फर्स्ट क्लास नहीं खेली, लेकिन फिर भी जो रिदम था और जो जो आप जहाँ पे आप बॉल गिराना चाहते थे, पहली बॉल से ऐसा देखा कि जैसे बॉल वहाँ गिर रहा है। जी जी बिल्कुल। नहीं, मैं 1 महीने पहले अभी जो हमारी ग्रेड 2 हुई थी हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी, उसके अंदर मैं 3 मैच खेलने गया था, लेकिन उसमें 7 मैचों की मैं बॉलिंग करके आया था उन 3 मैचों के अंदर। तो वहाँ कंडीशंस इसी तरह की थी? कंडीशन ऐसी नहीं थी, लेकिन ये था कि उससे ये फ़ायदा मिला कि आपको एक तो मैच प्रैक्टिस मिली, और सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि वहाँ पे अगर इतना स्पिन नहीं हो रहा था, लेकिन उसमें आपको एरिया का ज़्यादा अच्छा बेहतर तरीके से पता चला। अच्छा, आपके लिए इन कंडीशंस में या जनरली एज अ स्पिनर पेस वेरिएशन कितनी इम्पोर्टेंट है, और किस तरह से उसको आप इस्तेमाल करते हैं? देखें, ये 4 डे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट के अंदर आपको पेस ही है, वेरिएशन ही है जो आपको बचाती है आपके एरिया के साथ। अगर आप वहीं से आपका पेस ऊपर नीचे होता रहेगा, बैट्समैन की नज़र आगे ऊपर नीचे होगी तो ही आप उनको डिसीव करेंगे, और जो आपके क्लोजिंग फील्डर है तभी आपके उसमें काम में आएंगे, और जो स्लिप के फील्डर हैं और कीपर हैं जो। अच्छा, ये बताएं कि एज अ स्पिनर जब कोई चौका मारता है, वी सी के कभी कभार बैट्समैन आर लुकिंग टू स्कोर अगेंस्ट स्पिनर्स, वो कभी स्वीप मारते हैं, रिवर्स स्वीप मारते हैं, तो आपका क्या रिस्पॉन्स होता है? आप मतलब थोड़े से घबराते हैं या फिर आप उस चीज़ को कहते हैं कि अच्छा मैं कुछ और ट्राई करूं? किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं? देखें, एक चीज़ तो अब जिस तरह की कंडीशन है, आपको इससे मेंटली आप इस चीज़ के लिए रेडी होते हो, क्योंकि आपको सीधे बहुत कम खेला जाएगा यहाँ पर, और आपको स्वीप और रिवर्स स्वीप लगेंगे, तो उसमें कोशिश यही होती है कि कंसिस्टेंट अपनी लाइनों लेंथ पे बॉल करें और पेस वेरी करें कि उसके अंदर आपके पास कोई चांस आए, पेस वेरी करें और कभी तेज़ या कभी स्लो बॉल करें, तो उससे बस ये आप अपना चेंज करते हो, लेकिन मेरे ख्याल से अपनी लाइनों लेंथ चेंज नहीं करते हैं। आई थिंक सवाल कुछ इस तरीके से होना चाहिए था कि चक्के चौके तो स्पिनर्स को लगते ही रहते हैं, सवाल ये होना चाहिए था कि जब आपके जो फील्डर हैं, जो करीब में जो फील्डर जब वो कैच गिराते हैं तो तब आप कैसा फील करते हैं? विक्की भाई, आपको मेरे से ज़्यादा बेहतर तरीके से इस चीज़ का पता होगा। देखें उस वक्त आप, क्योंकि आपकी कोशिश यही होती है कि जो टाइम चल रहा था, अगर वो वहाँ पे हमें विकेट मिल जाती है, अनफॉर्चुनेटली कैचेस तो मैच में ड्रॉप होते हैं, लेकिन वो विकेट मिल जाती तो जो टाइम वो था, नया बैट्समैन आता, मेरे ख्याल से एक तो वो उसने पिछली इनिंग में भी रन्स किए हुए थे, और जो नया बैट्समैन आता उस पर भी प्रेशर होता, और जितना टारगेट है उसके अंदर मेरे ख्याल से वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता। ये जो पार्टनरशिप है, ये 2 जो बल्लेबाज हैं, इन्होंने ही रन्स किए हैं पिछली इनिंग्स में भी, तो इनको आउट करना सुबह कितना ज़रूरी है और कितनी जल्दी आउट करना ज़रूरी है? मेरे ख्याल से देखें, कोशिश यही है कि कम से कम इनको रन्स दिए जाएं, आप बाउंड्री बॉल इनको कम करें, बैट बॉल कम करें। सबर का गेम है और प्रेशर का गेम है, जिसने सबर से और प्रेशर को हैंडल किया, मेरे ख्याल से उसको सक्सेस मिलेगी। नहीं, आपके पास तो माशाल्लाह बहुत सबर है, और आप जितने सबर से आपने इंतज़ार भी किया इस मौके का, क्योंकि इतने अरसे से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे थे और ये इतना मौका बड़ा आपके हाथ में आया, और आप माशाल्लाह पिछले 3-4 साल से डोमिनेट कर रहे हैं इसको, और आप भी और साजिद भी, आई थिंक यू बोथ डन अ वंडरफुल जॉब, वेल डन।
थैंक यू वकार भाई। अच्छा, साजिद का आपने मेंशन किया, हम काफी आज देख रहे थे आप बार बार जाके उनसे कुछ बोल रहे थे थ्रू आउट द इनिंग्स, हम देखते रहे। क्या कोई टिप्स एक्सचेंज हो रही थी, क्या बात चल रही थी? साजिद को क्या समझाने की जरूरत है, मुझे समझ नहीं आ रही। यही समझ साजिद से तो मैं साजिद से खुद कोशिश करता हूँ कि मैं उससे कुछ सीखूं। बात यही हो रही थी, देखें आपको जिस तरह बैटिंग के अंदर पार्टनरशिप चाहिए होती है, बॉलिंग में भी आपको पार्टनरशिप चाहिए होती है। तो उस टाइम पे यही कोशिश थी कि उस सिर्फ सिंपल एक ही बात थी कि हमने अपने एरिया में बॉलिंग करेंगे, क्योंकि वो रिवर्स स्वीप हमें ज़्यादा मार रहा था। उसकी कोशिश मैंने उसे यही कहा था कि आप बीच में ही बॉल करेंगे, वहीं से एक हमें अगर एक कोई बॉल आगे पीछे हुआ तो हमारे पास चांस है काफ़ी। ये सिर्फ बात हुई थी। चलें ठीक है, आई होप कि सारे प्लान्स जो हैं सक्सेसफुल हो कल भी। बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड ऑफ कोर्स वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज गेम एंड ऑल द व्यूअर्स इन द UK. Remember, it's not just this coverage is going all around the world, and in particular the UK viewers can catch all of Pakistan cricket. Sign up for live.pcb.com.pk. We've got a tri-series coming up. There's South Africa. There is all that action lined up for you ahead. All right, don't forget it's day 4 of this test match, which could essentially prove to be a decider in this test series, and our coverage starts at 9:30 AM tomorrow from Gaddafi Stadium, Lahore. All right, thank you so much, Vakar bhai, to you as well, and you, Noman. Once again, best of luck. Right, it was a great day overall for Test cricket. We saw a bit of fight from South Africa. Pakistan also leading. They've got an advantage. They know their conditions really well. So tomorrow is going to be an interesting one. Until next time, it's goodbye.